In the previous lecture, we saw a story of Santosh Yadav, and that was part 1 of chapter number 8 from Beehive. This is part 2, and this is the story about Maria Sharapova. She was barely 18 when she achieved heights in the sport of tennis, and we are going to see her journey, how she started, what all struggles did she go through. That's all we are going to see here. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world #1 position in women's tennis. 2005, 22nd August 4, she won a match and she became the #1 tennis player in the world. All this happened in almost no time. No time यानी कि बहुत जल्दी हो गया सब कुछ. ठीक है, ऐसा नहीं मतलब कि आज ट्रेनिंग शुरू की और साल में अचीवमेंट हो गई, ऐसा नहीं. In no time, in the sense she was way too young, right? Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. लोगों को सालों साल लग जाते हैं. She reached the #1 position in just 4 years. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children could be prepared to endure. She was very young और अभी हम देखेंगे कि कैसे वो ट्रेनिंग के लिए अपनी फैमिली से अलग रही. ठीक है, बहुत छोटी है, like just she was hardly 18-19 years old. उससे कितने साल पहले से वो ट्रेनिंग ले रही थी, मतलब वो काफी यंग रही होगी. और इस छोटी सी एज में अपने पेरेंट्स के बिना बच्चे, बहुत कम बच्चे मैंने भी देखे हैं कि जो अपने पेरेंट्स पे इतना नहीं डिपेंड करते कि उन्हें छोटी छोटी चीज के लिए अपने पेरेंट्स को बोलना पड़े कि मतलब हाँ मुझे ये ला कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे इसमें हेल्प कर दो. बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से सब चीज संभाल लेते हैं. मारिया वाज वन ऑफ दोस चिल्ड्रन. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. वो 10 साल की भी नहीं थी तब उनको यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया गया. That trip to Florida with her father, Yuri, launched her on the path to success and stardom. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother, Yelena. उनको ट्रेनिंग के लिए यूएसए ले जाया गया. उनके फादर उनके साथ रहते थे. He used to work, she used to go to school, she used to train, and her mother was living somewhere else. So 2 साल तक वो बच्ची अपने मम्मा से दूर रही. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. उनकी मदर को वीजा restrictions फेस करने पड़े थे जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं जा पाई. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life. That tennis excellence would only come at a price. इसीलिए बोलते हैं तुम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, कुछ ना कुछ उस इंसान ने अपनी लाइफ में जाने ही दिया. मतलब वो छूटा ही है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पढ़ाई हो, इट कुड बी एनी XYZ, राइट. तो यहाँ पे ये बच्ची अपनी फैमिली से दूर रह रही है. शी गॉट द सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ हर फैमिली. ठीक है. I used to be so lonely, Maria recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going. So he couldn't see me either. वो बोल रही है कि मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती थी. एंड उसके फादर थे उसके साथ, मारिया के साथ ही थे, लेकिन टेनिस की जो ट्रेनिंग थी उनका रहना करना था यूएसए में, वो सबके खर्चे निकालने के लिए ही यूज्ड टू वर्क अ लॉट, और उसकी वजह से वो भी ज्यादा टाइम उनके साथ नहीं स्पेंड कर पाती थी. Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis pupils would come in at 11 p.m., wake me up, and order me to tidy up the room and clean it. See, this was how she was
टॉर्चर्ड। हाँ, यहाँ पे ये भी हम देखेंगे कि उसको उसके मतलब यही बता दिया है, इससे ज्यादा कुछ स्ट्रेच नहीं किया है। बट क्या बोल रही है वो कि वो प्रैक्टिस करके उनका दिन खत्म हो जाता था 8 बजे, और बाकी लोग जो है वो 11 बजे या लेट नाइट आते थे और उसको उठाते थे कि तू उठ, भले वो सो रही है, उसको उठाते। बुली करना बोलते हैं ना, होता ही है वो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग अच्छी बात है या कॉमन है, होता है, से आई डू नॉट मीन दैट, बट वी हैव सीन दैट इन many movies also. We have seen that, right? In Bhag Milkha Bhag also we have seen how brutally Milkha Singh was beaten up, right, by the competitors, by the rivals. तो यहाँ पे उसके साथ जो और लोग थे वो उसको कैसे परेशान कर रहे हैं कि उठो और हमारा रूम साफ करो अभी के अभी, right? Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. Now you have two choices. या तो फाइटिंग करो, ठीक है, या तो उस चीज में भी वो तुमको क्या सिखा रही है वो सिचुएशन वो समझो। तो ये बच्ची इतनी छोटी एज में भी she could have cried, she could have complained, she could have done ample of things which we usually do, but she did not do any of them. उसने उससे सीख लिया कि मुझे कैसे और डिटरमाइन के, मतलब हम बोलते हैं ना कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ बार अपने काम से भी जवाब देना ज्यादा बेहतर होता है। कि तब उसने जवाब नहीं दिया लेकिन उसने कोर्ट में बता दिया कि हु इज द चैंपियन, राइट? आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। इतनी छोटी एज में शी वॉज सो क्लियर, शी वॉज सो डिटरमाइंड, स्टेइंग अवे फ्रॉम हर फैमिली, कि मैंने कभी क्विट करने का, कितने भी प्रॉब्लम छोटे से, आजकल भी जनरली नोटिस कि छोटी सी छोटी भी प्रॉब्लम आई या छोटे से छोटा भी कुछ अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो चिल्ड्रन दिस डेज गिव अप अ लॉट वेरी क्विकली। ठीक है, तो मारिया यही सोच रही है, यही वो अपने बारे में शेयर कर रही है कि उसने कभी क्विट करने का सोचा ही नहीं, बिकॉज शी न्यू व्हाट शी वांटेड। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. बहुत सारे हमारी कंट्री में भी है, बाहर की कंट्री में तो है ही डेफिनेटली, हमारी कंट्री के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर हंगर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर डिटर्मिनेशन। एम एस धोनी के बारे में हम सब जानते हैं, राइट? वी हैव ऑल सीन हिज जर्नी थ्रू द मूवी डेफिनेटली। तो वो है, मैरी कॉम है, तो हंगर है, डिटर्मिनेशन है। एक एक रूम में रहते थे ये लोग, ठीक है, एक रूम किचन ऐसे घरों में रहते थे, वहां से लेके पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो दैट्स व्हाट शी इज आल्सो सेइंग, दैट वो कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं बिलोंग करती, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा कि शी इज सेइंग कि माय फादर हैड टू वर्क। क्यों उतना काम करना पड़ेगा? अगर अमीर इंसान होगा तो इतना काम नहीं करना पड़ेगा ना, पैसा होगा उसके पास सर्वाइव करने के लिए। दैट इटसेल्फ वाज अ पुश फॉर हर कि हाँ, आप मेरे पास ये चीज नहीं है लेकिन मैं मेहनत करूंगी और मैं ये अचीव करके दिखाऊंगी। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. वो बोलती है कि ये जो मेरे सीनियर्स यहाँ पे मुझे जो परेशान कर रहे हैं कि चल उठ, हमारा रूम साफ कर अभी के अभी एंड ऑल दैट, तो बोले ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा भी अगर मुझे कोई परेशान करता ना तो भी मैं सह लेती। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम अचीव करना था कुछ भी करके। That toughness runs through Maria even today. आज भी वो इतनी ही टफ है। It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004. You can Google it. Wimbledon is, I guess, one of the most क्या बोलते हैं, एकदम हाईएस्ट लेवल का मैच होता है वो। और आई गेस इट्स, आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट व्हाट इट इज, बट मैंने सुन रखा है। सो यस, वहां पे शी got the #1 position. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of, it's not summit, it's summit. Summit means height, right? Topmost. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis had touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बिल्कुल इमोशंस एकदम कंट्रोल, ठीक है। देयर वाज नो रूम फॉर, सब सब उसकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुए थे, सब उसकी स्टोरी से
क्या बोलते हैं, बहुत ही एंकरेजमेंट सबको मिला था, मोटिवेशन मिला था, लेकिन शी वॉज वेरी वेरी टफ, वो इमोशनल नहीं हो जाती थी, ठीक है, वेरी वेल बैलेंस्ड. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is the mantra for success. सबका सक्सेस मंत्रा होता है. क्या है मारिया का सक्सेस मंत्रा? कि जो अचीव करना है उसके पीछे लग जाओ. I work very hard at whatever I want to do and I am very, very competitive. ये एक क्वालिटी बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिवनेस. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन लाइफ. ठीक है. हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों का खराब करके हम खुद अपनी झोली भरे, उससे कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अस ओनली. बट what she means is to give the best, to give your heart and soul out for that thing that you want to achieve in life. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. है यूएसए से खेल रही थी, लेकिन थी तो रशिया की ना, थी तो वो साइबेरिया की. Clearing all the doubts, she says, I am Russian. It's true that US is a big part of my life. सारी ट्रेनिंग और सारा जो भी सीखा करा है वो यूएसए में हुआ है. ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली थी तो वो रशिया की ही. But I have Russian citizenship. My blood is totally Russian and I will play Olympics for Russia if they want. वो बोलती है कि मैं भले यूएसए का मेरी जर्नी में, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन मैं हूं तो रशिया से ही. मेरा सिटीजनशिप, मेरा ब्लड, सब कुछ रशियन, राइट. एंड she also adds that if Russia wants her to represent the country for Olympics, she is ready for that as well. Like any number of teen-aged sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing, dancing as her hobbies. ठीक है, छोटी थी, यंग एज की थी वो. ठीक है. एंड जब उनको पूछा गया कि उनकी हॉबीज क्या है, तो शी सेड दैट सिंगिंग, डांसिंग, फैशन एक्सेट्रा, जो उनके सिमिलर एज ग्रुप के होते हैं. She loves reading novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. Okay. Junk food, she was into it, not that much, but yes, indeed she was. Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. ठीक है. ये sacrifices कह ले हम, फैमिली से दूर रहना, इतना सारा ह्यूमिलिएशन जो उसके सीनियर से या उसके जो उसके साथ जो और लोग रह रहे थे उसको परेशान जो करते थे वो सहना. And she was ready. She knew it कि ये this is the price that I'm paying for what I want, for my dreams. Few would grudge her riches. She is now weeping. ठीक है. कि ऑब्वियसली नंबर 1 पोजीशन पे है, कितने इनको ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, कितना गवर्नमेंट की तरफ से प्राइज मनी मिलता है, कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, राइट. सो लोगों को भले जेलसी फील होती होगी, बट शी डिजर्व्स इट ऑल. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Monetary gains means they get money, right? Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number 1 in the world. That's the dream that kept me going. वही एक ड्रीम था जिसके पीछे वो लगी रही कि मुझे बस वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है. पैसे तो आते ही रहेंगे, ठीक है, नंबर 1 बन जाएंगी, फिर कहाँ से पैसे नहीं आएंगे, ऑब्वियस, राइट. यस, दैट्स ऑल. वेरी शॉर्ट. मैंने पहले ही कहा था कि दोनों ही चैप्टर्स बहुत शॉर्ट है और बहुत कट टू कट स्टोरीज बताई गई हुई हैं, थैंकफुली. या दैट्स ऑल. फॉर एनी क्वेरीज प्लीज bring all the doubts in the classroom. I am pretty sure there must not be any doubts. Chapter is very simple. Okay, that's all then. Thank you so much. See you soon.